ये है हेनरी वॉड्सवर्थ लॉन्गफेलो। द रेन cheers up people of all age groups. This is a spout. फीवर्ड ब्रेन का ये मतलब नहीं है कि ब्रेन को फीवर हो गया। पानी में इस तरह के रिपल्स नहीं बन जाते। ये जो वुडन फ्रेम लगा है ऑक्सन के हेड पे, द पोम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमने क्या पढ़ा था? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश जेम्स रीडर की बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज रेन इन समर। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय हेनरी वॉड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इस पोएम का टाइटल पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है पोएम किस बारे में है। यस, इट्स अबाउट समर सीजन में जब सब तप रहा होता है तो बारिश अपने साथ कितना जॉय लाती है, कितनी खुशी लाती है। सब लोग खुश होते हैं। पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स आर हैप्पी, चाहे वो कोई बूढ़ा आदमी हो, चाहे वो कोई बच्चा हो। आपको आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि बच्चे कितने खुश हो रहे हैं बारिश में, एंड दे आर प्लेइंग विद पेपर बोट्स, राइट? इट ब्रिंग्स जॉय टू एनिमल्स, इट ब्रिंग्स जॉय टू फार्मर्स। फार्मर्स कितना खुश होते हैं अपनी फसलों को बारिश में देखकर। सो ये सब चीजें पोएट ने बहुत ब्यूटीफुली कन्वे की है थ्रू दिस पोएम। आपको आपके स्क्रीन पर जो पिक्चर दिख रही है ये है हेनरी वॉड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ही वाज born in 1807 and he died in 1882. So he was an American poet. He taught for a time at Harvard College but later concentrated on his writing. He wrote lyric poems, often choosing the stories from mythology or legends as the subjects for his creations. Lyric poem क्या होती है ना? एक poem होती है which basically expresses poet's expressions and it has musical qualities. Correct? He enjoyed the reputation of being the most popular American poet of his time. इस पोम को रीड करने से पहले एक बार इसका माइंड मैप देख लेते हैं. The poet describes the arrival of rain in summer beautiful and as a blessing due to many reasons. अब rain blessing क्यों है? किन reasons की वजह से rain blessing है? वो हम एक एक करके देखते हैं. The rain washes away all the dust and heat existing in the narrow lanes and broad streets of the city. The poet compares the rain's rhythmic sound on the roof to the sound of horses' hooves. अब हम जैसे जैसे पोम पढ़ेंगे इसको मैं विद पिक्चर्स अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? The rain cheers up people of all age groups. The poet gives examples of how rain cheers up sick man as well as school children. अब ये चीज ना आप इस पोम में बहुत देखोगे कि पोएट ने बहुत कंट्रास्ट में बात की है. फॉर एग्जाम्पल, द रेन वॉशेज अवे द डस्ट एंड हीट ऑफ नैरो लेन्स एज वेल एज ब्रॉड स्ट्रीट्स. द रेन इज चीयरिंग अप पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स. बूढ़े आदमी को भी चीयर अप कर रहा है, बच्चे को भी चीयर अप कर रहा है. द फील्ड्स whose vegetation has dried and turned yellow. क्यों सूख गया सब? Because of scorching heat. They resemble leopards' tawny and spotted hide. Tawny का मतलब क्या है? Brownish yellow, and hide means skin. They too are overjoyed on the arrival of rain. The hard-working oxen, oxen क्या हो गए? Ox के plural को हम oxen बोलते हैं. Is thankful to God for rain. The farmer also sees the rain as a blessing, as his fields will yield a bountiful crop and bring prosperity. ये था इस poem का mind map. ये सब aspects अब हम cover करेंगे stanza by stanza. So let's start reading the poem now. How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fiery street, in the narrow lane. How beautiful is the rain. इस stanza का meaning देखते हैं. The poet highlights his joy after a strong downpour. Downpour means rainfall. He describes the beauty of the rain and its soothing effect as it washes away the dust and heat of summer, which exists in narrow lanes and broad streets of the city. Rain does not differentiate between the broad streets and narrow lanes and falls bountifully everywhere. Street के लिए जो word use किया गया है fiery. Fiery means hot. अब इसमें poet क्या बताना चाह रहे हैं? That rain is falling bountifully everywhere. चाहे narrow road हो, चाहे broad road हो, it is falling everywhere. ऐसा नहीं है कि narrow है तो कम हो रही है, broad है तो ज्यादा हो रही है, नहीं. It is washing away the dust and heat of narrow as well as broad roads of the city. Okay, so there are a few words which are in red and a few words which are in white. Red words वो वाले words हैं जिनके meanings आपकी book में given है. White वो वाले words हैं जिनके meanings मैंने खुद अपने तरफ से लिखे हैं. For better understanding of the poem. So अगर आपको I think exam perspective से जो meanings याद करने हैं वो red वाले करने होंगे. Correct? How it clatters along the roofs like the tramp of hoofs. How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout.
How it clatters along the roofs. Clatters का क्या मीनिंग है? To make a continuous rattling sound. So इसमें पोइट क्या बता रहे हैं कि जब बारिश छत पर पड़ती है तो जो टप 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 कंटिन्यूस आवाज आती है ना, उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज क्लैटर. लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स. अब हूफ क्या होते हैं ना, कई एनिमल्स होते हैं जैसे हॉर्सेस हो गए, तो इनके ये फीट पे ना, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का आपको आपके स्क्रीन पे हॉर्स दिख रहा है, इसका जो फीट पे ये ब्लैक पार्ट है ये बहुत हार्ड होता है. सो व्हेन दे रन इन हूफ्स की वजह से एक रिदमिक साउंड आती है. तो रेन जो छत पे टप 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 गिर रही है वो इन हूफ्स की साउंड के साथ कंपेयर किया गया है. हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट. गशेस का मतलब क्या है? फ्लो आउट ऑफ समथिंग सडनली एंड क्विकली. सो वाटर जब सडनली बाहर निकलता है, कहाँ से बाहर निकलता है? फ्रॉम द थ्रोट ऑफ ओवरफ्लोइंग स्पाउट. स्पाउट एक पाइप होती है जो बारिश के पानी को रूफ से नीचे लाती है, जैसे आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है. ठीक है, ये जो है दिस थिंग, दिस इज अ स्पाउट. एक पाइप छत पे लगा दी जाती है जिससे बारिश का पानी छत पे इकट्ठा नहीं होता, वो नीचे फ्लो करता है. इस स्टैंजा का मीनिंग देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द पोएट, द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन रूफटॉप्स इज प्लीजिंग टू द ईयर्स. प्लीजिंग टू द ईयर्स मतलब सुनने में अच्छा लगता है जो, बिकॉज ऑफ इट्स रिदम. He compares this rhythm to the sound of horses' hoofs. The heavy rain gushes down the narrow drain pipes. Across the window pane it pours and pours, and swift and wide, with a muddy tide. Like a river down the gutter rose, the rain, the welcome rain. So what is a window pane? जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, it is a single piece of glass in a window. उसको हम window pane कहते हैं. Across the window pane, it pours and pours. इसका क्या मीनिंग है? The rainfall is continuously pouring on the glass of the window. And swift and wide with a muddy tide. Swift means quick. Tide means change in sea level. So जब sea level ज़्यादा होता है हम उसको high tide कहते हैं, जब sea level कम होता है हम उसको low tide कहते हैं. Like a river down the gutter rose, the rain, the welcome rain. अब इसमें ये जो gutter word है, gutter is not हिंदी वाला gutter नाला, no. Gutter is an English word. ये जो आपको आपके स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, this white thing, this is a gutter. ये क्या होता है? एक चैनल होता है which is fixed beneath the edge of a roof. अब ये gutters क्यों इंस्टॉल होते हैं घर पे? ताकि बारिश का जो पानी है वो इससे इकट्ठा होके उसको चैनलाइज कर पाए और कहीं और फ्लो करे. अगर गटर नहीं लगेंगे तो क्या होगा? पानी या तो घर के बेसमेंट में इकट्ठा हो जाएगा, इससे घर का फाउंडेशन भी वीक हो सकता है. सो दैट इज व्हाई गटर्स आर इंस्टॉल्ड इन द होम्स. इसमें पोएट क्या बता रहे हैं कि जो रेन है वो विंडो पेन पे फॉल होके जब नीचे गिरती है, इट इज फॉर्मिंग अ क्विक एंड वाइड मडी फ्लो. और ये पानी गटर में इकट्ठा होके ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक रिवर फ्लो कर रही है. So let's read the meaning. The poet describes that continuous rain falling on the window pane forms a quick and wide muddy flow. It seems like a river, only it flows through the gutters instead and it's muddy. The poet feels joyous about the rain and welcomes it with open arms. The sick man from his chamber looks at the twisted brooks. He can feel the cool breath of each little pool. His fevered brain grows calm again and he breathes a blessing on the rain. इसका मीनिंग देखते हैं. The sick man from his chamber looks. Chamber का क्या मीनिंग है? रूम. सो एक सिक मैन है, वो अपने चेम्बर से बाहर रेन देख रहा है. एंड व्हाट इज ही वाचिंग? ही इज लुकिंग एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स. ब्रूक्स क्या होता है? ब्रूक मीन्स अ स्मॉल स्ट्रीम. सो ट्विस्टेड ब्रूक्स कुछ ऐसे दिखते हैं जैसा आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं. सो द सिक मैन इज वाचिंग दीज ट्विस्टेड ब्रूक्स. ही कैन फील द कूल ब्रेथ ऑफ ईच लिटिल पूल. हिज फीवर्ड ब्रेन. अब फीवर्ड ब्रेन का क्या मीनिंग है? रेस्टलेस माइंड ड्यू टू फीवर. फीवर्ड ब्रेन का ये मतलब नहीं है कि ब्रेन को फीवर हो गया. इट मीन्स दैट हिज माइंड इज रेस्टलेस ड्यू टू फीवर. एंड बिकॉज ऑफ रेनफॉल, क्योंकि वो बारिश देख रहा है, उसको देखने में अच्छा लग रहा है, एंड ही इज ब्रीदिंग इन द कूल एयर. हिज रेस्टलेस माइंड इज अगेन काम. शांत हो गया उसका दिमाग. एंड ही ब्रीद्स अ ब्लेसिंग ऑन द रेन. वो रेन को दुआ दे रहा है. इसका मीनिंग देख लेते हैं. The rain cheers up people of all age groups. The poet gives examples of how rain cheers up a sick man as well as school children. इस stanza में हम पढ़ रहे हैं that how rainfall is cheering up a sick man. Next stanza में हम पढ़ेंगे how rainfall is cheering up school children. The poet talks about a sick man looking at the small streams and feeling the cool presence of rain from his room. Room के लिए क्या word use किया गया poem में? Chamber. His mind, which was restless because of fever. इसके लिए क्या word use किया गया है? Fevered brain.
becomes calm due to rain, and he feels better. He feels relieved and thankful and blesses the rain. From the neighboring school come the boys with more than their wonted noise and commotion, and down the wet streets sail their mimic fleets, till the treacherous pool engulfs them in its whirling and turbulent ocean. इसमें थोड़े न्यू वर्ड्स हैं, एक एक करके इनके मीनिंग्स देखते हैं, फिर हम टोटालिटी में स्टैंजा का मीनिंग देखेंगे। इसमें पोएट क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बच्चे वैसे भी बहुत शोर मचाते हैं। वांटेड नॉइज मीन्स यूजुअल नॉइज, नॉइज वर्ड यूज किया गया, मतलब खप मचाते हैं, शोर मचाते हैं। बट बारिश में ये बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, इतने खुश हैं कि जितना नॉर्मली शोर मचाते हैं उससे भी ज्यादा शोर मचा रहे हैं। एंड कमोशन वर्ड यूज किया गया, कमोशन मीन्स नॉइजी डिस्टर्बेंस। एंड डाउन द वेट स्ट्रीट्स सेल देयर मिमिक फ्लीट्स। मिमिक फ्लीट्स हेयर मीन्स पेपर बोट्स, जैसे आपको आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ये बच्चे सेल कर रहे हैं पेपर बोट्स। Till the treacherous pool engulfs them in its whirling and turbulent ocean. Treacherous का क्या मीनिंग होता है? धोखा देने वाला, डिसेप्टिव। अब पूल को ट्रेचरस क्यों कहा गया है? पूल वैसे तो बहुत काम है, बहुत शांत दिख रहा है, बट स्टिल ये पेपर बोट्स को गीला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। engulfs them in its whirling and turbulent ocean. whirling का मीनिंग क्या होता है? ये जैसे आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पानी में इस तरह के रिपल्स नहीं बन जाते, उसके लिए वर्ड whirling यूज किया गया है। and turbulent ocean, turbulent means stormy. इसका मीनिंग देख लेते हैं एक बार। The small boys from the neighborhood school are excited to see the rain and are screaming in excitement. So more than their wanted noise, commotion, इस सब से हमको ये पता चलता है the boys are screaming in excitement. They sail their paper boats in the stream and rejoice watching their fleet. Rejoice मतलब enjoy. Fleet एक collective noun होता है, group of ships को हम कहते हैं fleet of ships. Till the forceful current of water washes them away swiftly. Them word किसके लिए use किया गया है? Them word has been used for paper boats. Swiftly means quickly. In the country, on every side, where far and wide, like a leopard's tawny and spotted hide, stretches the plain to the dry grass and the drier grain. How welcome is the rain. मीनिंग देखते हैं अब इसका। In the country, on every side. सो बेसिकली अब ये पोएम का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। अब तक हमने क्या पढ़ा कि रेन का इफेक्ट सिटी और सिटी लाइफ पर क्या होता है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि रेन का इफेक्ट कंट्री साइड पर क्या होता है। इन द कंट्री ऑन एवरी साइड वेयर फार एंड वाइड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फार एंड वाइड? फार एंड वाइड को बेसिकली हिंदी में बोले तो दूर दूर तक, सो ओवर अ लार्ज एरिया। Like a leopard's tawny and spotted hide. So tawny means brownish yellow. Leopard ऐसा दिखता है ना, so leopard का skin देखिए कैसा होता है, spotted होता है and it's brownish yellow. So बिल्कुल जो land होता है dry, वो leopard की skin की तरह दिखता है। Hide means skin. Stretches the plain to the dry grass and the drier grain. How welcome is the rain. इसका मीनिंग देखते हैं। The poet leads us to visualize the countryside where the heat of the summer has dried the vegetation around and turned it yellow. The entire field means the whole field, resembles leopard's yellow and brown spotted skin. The dried up earth is overjoyed on the arrival of rain. In the furrowed land, the toilsome and patient oxen stand, lifting the yoke encumbered head, with their dilated nostrils spread. They silently inhale the clover-scented gale and the vapors that arise from the well-watered and smoking soil. इसमें भी हम पहले वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं, फिर टोटालिटी में स्टैंजा का मीनिंग देखेंगे। इन द फरोड लैंड। नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फरोड लैंड? फरोड मींस प्लोड। प्लोइंग क्या होता है ना, सॉइल को लूजन अप करने को प्लोइंग कहते हैं, करेक्ट। सो बेसिकली इन द फरोड लैंड, ये आपको लैंड पे दिख रहे हैं, ये इस तरह से लाइंस बनी हुई हैं, ये चैनल्स बने हुए हैं, इसको हम फरोज कहते हैं। The toilsome and patient oxen stand. Now, what is the meaning of the word toilsome? Toilsome means hardworking. Lifting the yoke encumbered head. इसमें हम पहले अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। योक क्या होता है? ये जो आपको आपके स्क्रीन पर ऑप्शन दिख रहे हैं, इनके हेड पे ये जो वुडन स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड अ योक। सो बेसिकली इट इज अ वुडन फ्रेम विच इज फास्टेंड ओवर द नेक। ये जो वुडन फ्रेम है, ये बेसिकली प्लो है।
अगला वर्ड जो यूज किया गया है दैट इज एनकम्बर्ड। अब एनकम्बर का मीनिंग क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट समवन और समथिंग इन सच अ वे दैट फ्री मूवमेंट और एक्शन इज डिफिकल्ट। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो वुडन फ्रेम लगा है ऑक्सन के हेड पे, इसकी वजह से ऑक्सन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है। सो द वर्ड विच हैज बीन यूज्ड इज योक एनकम्बर्ड हेड with their dilated nostrils spread. So the word dilated means wider or further open than usual. So basically जितने उसके nostrils spread होते हैं usually उससे ज़्यादा open है, spread है. They silently inhale the clover scented gale. Clover क्या होता है? Clover is a type of plant. ये कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है? Gale means strong wind. And the vapors that arise from the well-watered and smoking soil. इसका मीनिंग देखते हैं. The poet is describing that the oxen with their head burdened with yoke are tired after plowing. The heat rises from the earth and the air smells like clover as drops of rainfall cool the hot soil. The tired oxen silently inhale this cool air. So basically plowing के बाद ये oxen बहुत थक गए हैं and they are silently inhaling this cool air after the rainfall. For this rest in the furrow after toil, their large and lustrous eyes seem to thank the Lord more than man's spoken word. For this rest in the furrow after toil. Toil means hard work. Furrow मैंने आपको अभी बताया था जो plowing के टाइम वो जो लैंड में चैनल्स बन जाते हैं. So a long narrow trench made in the ground by a plow. Basically क्या होता है? सॉइल को लूजन अप कर देते हैं ताकि उसमें बीज बो पाए. Their large and lustrous eyes. Lustrous का क्या मीनिंग होता है? Lustrous means gleaming, shining. Seem to thank the Lord. Lord means God. More than man's spoken word. So oxen इतना plowing hard work के बाद थक गए हैं. Because of rain, they are getting a chance to rest. So they are thankful to God for that. यही लिखा गया है इसमें. The poet is talking about the feelings the rain evokes in animals. He describes that hardworking, tired, and patient oxen are looking towards the sky and are very thankful to God for His mercy. अब इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मैंने जो His लिखा है ना, H is capital Y because this pronoun His has been used for God. जब भी हम God के लिए pronoun use करते हैं, His blessings, His mercy, we use capital H. Last stanza of the poem. Near at hand, from under the sheltering trees, the farmer sees his pastures and his fields of grain as they bend their tops to the numberless beating drops of the incessant rain. He counts it as no sin that he sees therein only his own thrift and gain. इसका मीनिंग देखते हैं. Near at hand, from under the sheltering trees, the farmer sees his pastures. Now, what is the meaning of the word pastures? Pastures are basically grazing lands. The land which is covered with grass and other low plants suitable for grazing animals. Crops के पास जो trees grow कर रहे हैं, वहाँ farmer is standing under the tree and he is seeing his pastures and his fields of grain as they bend their tops to the numberless beating drops. Numberless beating drops is the continuous rainfall. Incessant means continuous. He counts it as no sin that he sees therein. Therein means in that. Only his own thrift and gain. Thrift means prosperity. In these lines, the poet describes the farmer's joy and satisfaction as he sees the rain falling from the sky and replenishing the crops and fields. So basically जो उसके fields थे, जो crops थे, जो बिल्कुल गर्मी में सूख गए थे, बारिश ने उनको replenish कर दिया है. He sees the rain as a blessing as his fields will yield a bountiful crop and bring prosperity. ये mind map में भी मैंने बताया था. Yield a bountiful crop. Yield a bountiful crop means now the crops will grow in abundance and bring prosperity. Bring prosperity कैसे? Because now अब उसके crops जितने ज़्यादा होंगे, he'll be able to sell them and then he'll earn money. So that will bring him prosperity. So जो आपके poem में word use किया गया है thrift. Thrift means prosperity. This finishes this beautiful poem. जल्दी से इसकी summary देख लेते हैं.
In the poem Rain in Summer, the poet H.W. Longfellow describes the arrival of rain in summer beautiful and as a blessing due to many reasons. The poem can be broadly divided into two parts. हमने क्या पढ़ा था? First part was about city life and second part was about countryside. चलिए हम city life के बारे में पढ़ते हैं. The first part talks about the city, where the poet describes the positive effect of rain on different places and people. The rain washes away all the dust and heat of the city and brings respite from summer heat. Respite matlab rahat. So everything becomes fresh. The poet compares the rain's rhythmic sound on the roof to the sound of horses' hoofs. He also gives examples of how rain cheers up the people of all age groups. He gives examples of a sick man as well as school children. The sick man feels calm and his spirits lift at the sight of newly formed brooks and pools. The school children also enjoy playing in the water puddles with their paper boats. In the second part of the poem, the poet leads us to visualize the countryside where the heat of the summer has dried the vegetation around and turned it yellow. The entire dried up field resembles the leopard's yellow and brown spotted skin. The dried up earth is overjoyed on the arrival of rain. The happiness in the hard-working oxen's eyes suggests that they are thanking God for his mercy. The farmer also sees the rain as a blessing, as his fields will yield a bountiful crop and bring prosperity. हम इस poem के question and answers करेंगे. It will include the book exercises as well as extra questions from this chapter. So let's start. Let's start with pick the correct options. First है the sick man blesses the rain because. Options क्या है? He breathes its scent, it twists and turns as a brook, it calms his fevered brain, it cools the fiery streets. तो क्या पढ़ा था हमने? That it calms his fevered brain. Next है the school boys come out in the rain too. Run around, mimic others, shout loudly, sail their paper boats. तो इसका क्या आंसर होगा? Sail their paper boats. Third है the oxen seem to thank the Lord because the rain gives them. What are the options? Time to rest, furrows, food, grain. तो rain क्या देता है oxen को? Time to rest. Next है the farmer is grateful for the rain because it would provide water to his oxen, bring him prosperity, calm him, fill the rivers. So the farmer is grateful for the rain because it would bring him prosperity. Multiple choice questions हो गए, पर question answers देख लेते हैं. First question, which adjectives have been used in the poem to describe the rain? The adjectives used in the poem to describe the rain are beautiful, welcome, swift, white and incessant. Incessant means continuous. Next question, the beauty of the sound of rain and the movement of rainwater is brought out by comparisons. Find them in the poem. The following comparisons bring out the beauty of the sound and movement of the rain. Clatters along the roofs like the tramp of hoofs, like a river down the gutter rows. Next question करते हैं, question number 3. How does the plain look before the rain? So answer क्या है इसका? Before the rain, the plain resembles a leopard's tawny and spotted hide, indicating dryness and patches. So इसमें मैंने जो important keywords है ना, वो मैंने green में highlight किए हुए हैं. आप भी चाहो तो आप अपने answer sheet में ये keywords underline कर सकते हो. Next question. What do the hard-working oxen do when it rains? The hard-working oxen who are tired after their toil means hard work, inhale the clover-scented cool air. They look towards the sky and are very thankful to God as they get to rest in the furrowed land. Next question, how does the farmer react to the rain? The farmer sees the rain as a blessing. He looks at his fields and rejoices silently. He is thinking that a good rain would yield a bountiful crop and he would earn more money after selling the crops. Next question, with what does the poet compare the sound of raindrops on roofs? The poet compares the sound of raindrops on roofs to the sound of horses' hoofs. ये सब explanation में बहुत डिटेल में हमने अच्छे से किया along with many pictures. So आपने अगर नहीं देखा explanation एक बार आप वहाँ देख लेना. Next question, why is the street called fiery? So fiery का क्या meaning होता है? Hot. So the street is called fiery because it is extremely hot. Why is it hot? Due to scorching heat of the sun.
Next question, what calms the sick man's fevered brain? Looking at the small streams and feeling the cool presence of rain from his room calms the sick man's fevered brain. Next question, question number 9. What do the schoolboys do in the rain? Answer, the schoolboys are excited to see the rain and are screaming in excitement. They sail their paper boats in the stream and rejoice watching their fleet. Fleet हमने क्या किया था? Ships के collective noun को कहते हैं fleet of ships. Right? Next question. The poet seems to enjoy the rain. How does he convey it through the poem? The poet expresses his enjoyment of rain through vivid and joyful imagery. He describes the positive effect of rain on different places and people of the city. He highlights that the rain washes away all the dust and heat of summer. It has a calming effect on the sick man and brings joy to the school children. The poet also leads us to visualize the countryside, where the dried up earth is overjoyed on the arrival of rain. The farmer and his oxen are also grateful for the blessings showered by the rain. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कर लेते हैं. फर्स्ट है, ये आपकी बुक में गिवन है, बैक एक्सरसाइज है बुक की. एंड डाउन द वेट स्ट्रीट्स सेल देयर मिमिक फ्लीट्स till the treacherous pool engulfs them in its whirling and turbulent ocean. Question answers देख लेते हैं. Who do the mimic fleets belong to? The mimic fleets belong to the schoolboys. B part करते हैं. What is the treacherous pool and why do you think it has been called treacherous? Treacherous का meaning हमने क्या किया था? Deceptive, धोखा देने वाला, right? So what is the treacherous pool? The treacherous pool is the one created by heavy rain. Next part क्या है? Why do you think it has been called treacherous? It has been called treacherous as it engulfs the paper boats of the school boys. Next reference to context है. As they bent their tops to the numberless beating drops. Question answers देखते हैं. Who are referred to as they? The stems of farmers' crops and pastures are being referred to as they. B part है. What does the word numberless indicate? Numberless कहाँ mentioned है? To the numberless beating drops. So the word numberless indicates the uncountable raindrops falling from the sky. And with this, we finish the questions and answers of the poem Rain in Summer. I hope आपको सारे questions answers and ये poem अच्छे से समझ में आ गई है. If you have any doubt, any query, please post in the comment box and I'll revert at the earliest. Thanks for watching. Stay tuned for more updates.